So up to now we have dealt with Namakam all Anuvakams and Chamakam 1 to 6 Anuvakams. Today we are going to deal with Saptam Anuvakam, Ashtam Anuvakam and Navama Anuvakam 7, 8 and 9. Okay, who will start first along with me? I'll start, sir. Good. This Saptam Anuvakam is a bit difficult, like this is almost a breathing exercise. So first I will break down the things, okay? See, this is the first 2 lines we have to chant, okay? First I chant and show you how to chant it, then we will cut and you will practice and then finally you chant, okay? Okay. See, first you can see this agum suschame. Agum means that you can see double lines. Then upagam. Agum, upagam. Upagam means down second line. Upagam. Then again you can see double anudatas. So wherever you see double anudatas, what should we do? What is the rule? First syllable you should say low and second syllable still low. Got it? Could you see the Saptam Anuvakam? Yes, sir. Yes, sir. You can. Did you understood what I mean to say? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Agum suschame rasmischame dha abhyaschame dhipatischama upagum suschame taryamaschama aindravayavaschame. This is what we are going to practice now. Okay? Right. Agum suschame, agum down, agum suschame, Agum suschame, agum suschame, Agum suschame, rasmischame dha, Rashmischame da, ra down, scha down, rasmischame dha, Rashmischame da, rasmischame dha, Rashmischame da, rasmischame dha, Rashmischame da, rasmischame dha abhyaschame, Rashmischame da abhyaschame, rasmischame dha abhyaschame, Rashmischame da abhyaschame, agum suschame rasmischame dha abhyaschame, Agum suschame da agum suschame, Rashmischame da abhyaschame, bhyaschame, Yaschame, bhyashchame, Yaschame, bhya, bh Yaschame, agum suschame rasmischame dha abhyaschame, Agum suschame, Rashmischame da abhyaschame, bhyaschame dhipatischama, bhyashchame dhipatischama, Yaschame, Dhipatischame, agum suschame rasmischame dha abhyaschame dhipatischama, Agum suschame, Rashmischame dya. don't elongate that. Okay, I do understand that you need to elongate that, but second one is, the entire Anuvakam you need to secure the breath. That's why little bit, not full elongation, little elongate is enough. Okay, see, you have to conserve your energy until Aindra Vayavasme. If you keep elongating, your breath you will lose in between. I hope you understand. Yeah, come on. Agum suschame, Rashmischame da abhyaschame, Dhipatischama, Upagum suschame taryamaschama, Upagum suschame, Tadyamaschama, Upagum suschame taryamaschama,
Upagumshishcha mentadhyamashcha ma. See, upagum is not a direct word. Upagum, down. Upagum, pa and pa is down. From u to pa is down. From pa to gum, it is gum is down. Got it? Upagum. Suscha mentadhyamashcha ma. Upagumshishcha mentadhyamashcha ma. Mentadhyamashcha ma. Mentadhyamashcha ma. Aindravayavascha me. Aindravayavascha me. Agumsuscha me. Rasmischa me. Daabhyascha me. Dhipatischa ma. Agumshishcha me. Rashmishcha me. Daabhyascha me. Dhipatischa ma. Upagumsuscha me. Tadyamascha ma. Aindravayavascha me. Upagumshishcha mentadhyamashcha mendriyavascha me. Upagumsuscha me. Tadyamascha ma. Aindravayavascha me. Upagumshishcha mentadhyamashcha ma. Aindravayavascha me. Aindravayavascha me. Aindravayavascha me. Aindravayavascha me. Aindravayavascha me. Correct. Agumsuscha me. See. Agumsuscha me. Rasmischa me. Daabhyascha me. Dhipatischa ma. Agumshishcha me. Rashmishcha me. Daabhyascha me. Dhipatischa ma. Upagumsuscha me. Tadyamascha ma. Aindravayavascha me. Upagumshishcha mentadhyamashcha me. Mascha ma. Upagumshishcha mentadhyamashcha ma. Aindravayavascha me. Agumsuscha me. Rasmischa me. Daabhyascha me. Dhipatischa ma. Upagumsuscha me. Tadyamascha ma. Aindravayavascha me. Agumshishcha me. Rashmishcha me. Daabhyascha me. Dhipatischa ma. Upagumshishcha mentadhyamashcha ma. Aindravayavascha me. Maitravarunascha ma. Maitravarunascha ma. Maitravarunascha ma. Maitravarunascha ma. Asvinascha me. Ashvinascha me. Pratiprasthanascha me. Pratiprasthanascha me. Sukrascha me. Shukrascha me. Manthi cha ma. Manthi cha ma. Agrayanascha me. Agrayanascha me. Vaisvadevascha me. Vaishvadevascha me. Vaisvadevascha me. Vaishvadevascha me. Maitravarunascha ma. Asvinascha me. Pratiprasthanascha me. Sukrascha me. Manthi cha ma. Agrayanascha me. Vaisvadevascha me. Maitravarunascha ma. Ashvinascha me. Asvinascha me. Maitravarunascha ma. Ashvinascha me. Pratiprasthanascha me. No, stop. Pratiprasthanascha me. Price down. Pratiprasthanascha me. Pratiprasthanascha me. Sukrascha me. Manthi cha ma. Agrayanascha me. Vaisvadevascha me. Shukrascha me.
मन्थी च म आग्रयणश्च मे आग्रयणश्च मे आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे वैश्वदेवश्च मे वैश्वदेवश्च मे आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे Good. अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेदा आभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रगणश्च मे वैश्वदेवश्च मे Should I try, sir? Try, you will do it. I know. अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे आभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे Your confidence is now 90%. Just you have to consider Upagumsuscha mentaryamascha mascha that is one thing. Pratiprasthanascha me. Yeah. Okay? Yeah. Agumsuscha me rasmischa meda abhyascha medhipatischa ma upagumsuscha mentaryamascha ma aindravayavascha me मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रगणश्च मे वैश्वदेवश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे आभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे very good. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मेति ऋतुग्रहाश्च मेति ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च नरश्च वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहा not grahascha it is grahascha
ऋतुग्रहाश्च मेति ऋतुग्रहाश्च मेति ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च मेति next no please listen please try to capture the swaram okay ग्राह्याश्च ग्राह्या ग्राह्याश्च 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 ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ग्राह्याश्च ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च मे ग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च मेति ग्राह्याश्च say 3 times grahyascha just say 3 times you will get acclimatized with that ग्राह्याश्च 1 3 times you say ऋतुग्रहा please ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च say 3 times ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च No problem. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च वैश्वानरश्च see please observe the swaram वैश्वानरश्च see everywhere like that grahascha me next ऐन्द्राग्नश्च मे devascha me see you observe this first one will go down next one middle next upper it's like that ध्रुवश्च मे वैश्वा next narascha na is down narascha
grahascha meti. Okay, grahyascha ma. Next, Aindragnascha me. Next, devascha me. You observe the pattern. Swaram is same. Observe, you observe, huh? Yeah. Please, starting from Dhruvascha me, you chant. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे ग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्राहाश्च मे दिग्राह्याश्च मे ग्राह्याश्च याह्याश्च ग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. Once more I put. Please. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. That may you put. मरुत्वतीयाश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. माहेन्द्रश्च माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे. आदित्यश्च मे. सावित्रश्च मे. सावित्रश्च मे. सारस्वतश्च मे. सारस्वतश्च मे. पौष्णश्च मे. पौष्णश्च मे. पात्नेवतश्च मे. पात्नीवतश्च मे. हार्योजनश्च मे. हार्योजनश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. महेन्द्रश्च आदित्यश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. महेन्द्रश्च आदित्यश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे. आदित्यश्च मे. आदित्यश्च मे. सावित्रश्च मे. सारस्वतश्च मे. पौष्णश्च मे. सावित्रश्च मे. सारस्वतश्च मे. पौष्णश्च मे. पात्नेवतश्च मे. हार्योजनश्च मे. पात्नीवतश्च मे. हार्योजनश्च मे. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. महेन्द्रश्च आदित्यश्च मे. सावित्रश्च मे. सारस्वतश्च मे. पौष्णश्च मे. पात्नेवतश्च मे. हार्योजनश्च मे. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च वैश्वानरश्च ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. वैश्वदेवश्च मे. वैश्वदेवश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे. माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे. सावित्रश्च मे. सारस्वतश्च मे.
पौष्णश्च मे पौष्णश्च मे पौष्णश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे हारियोजनश्च मे. Okay, you go on with who will be the next? I do, sir. Yes. अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेधा आभ्यश्च मेधिपतिश्च म अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेधा आभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेधा आभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेधा आभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे see observe the swaram Varaprasadi. Upagumsuscha meऽन्तर्यामश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे ऐन्द्र no there no elongation there. ऐन्द्रवायवश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दी च म आग्रयणश्च मे here वैश्वदेवश्च मे that ending will come वैश्वदेवस्य मे not प्रतिप्रस्थानस्य मे okay मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे आश्विनश्च मे please do like this आश्विनश्च मे आश्विनश्च मे मे upper मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे good ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे good Varaprasadi very good next who will be doing Sir, I will do, sir. Meenakshi ma'am okay Yes, sir. अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेधा आभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेधा आभ्यश्च no stop Medha how you are chanting like that Medha Agum also you should lower your voice like agum not like agum no agum like this okay agum suscha me like that please अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेधा आभ्यश्च मेधिपतिश्च Medha please say it on get swaram madam Medha abhyascha medhipatischa ma please along with it Medha abhyascha medhipatischa ma मेधा आभ्यश्च मेधिपतिश्च good please continue from the beginning Okay, sir. अगुंसुश्च मे
पुंसश्च मे तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च माग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे मंथी, that is manthi, not manthi, it is manthi. One second. Yeah. Manthi, okay. So repeat Yeah, that. please. Sukrascha me, Manthi are not stressing, sir. Manthi chama. You should stress no manthi chama. Okay. Sukrascha me, Manthi chama, Agrayascha me, Vaishyadevascha me. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. This one, only one point. ऋतग्रहाश्च मेति, please complete it. ऋतग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च म, आराम से. Yeah. Okay. I'll start from the beginning. Yeah, please start. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे. सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे औष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे. हार्योजनश्च मे हार्योजनश्च मे. सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे औष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे. How you are pronouncing Patnivatascha me? Please pronounce it. पात्नीवतश्च मे. Patnivatascha me. Pronunciation is correct, sir? Pronunciation is correct. Swaram is wrong. Vatascha me. Please pronounce it. Patnivatascha me. Haryojanascha me. Without swaram, the entire meaning will change. That is the problem with Vedam. Yeah. Okay, good. Next, who will chant? I will chant. Yeah. अगुंसश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसश्च मेऽन्तर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे अगुंसश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसश्च मे तर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे. Breath is not sufficient, Kanjanji.
Yeah, right. With Upagam Susama, your breath is finished. That's why Yeah. Medhipatischa, there you take the breath, light breath, and then start a fresh Upagam. Okay? Then it will be sufficient. With practice, you will improve. Without taking the breath like me, you will chant. Okay? Okay. Yeah. Okay. Chant it. Angustuscha me. What is that? What is that? Angustuscha. Anguma. No. Agum Soscha me. Yeah. Agumtuscha me. Rasmischa me. Dābhyascha me. Dipatischa me. Upagumtuscha me. Medhipatischa. Please chant like this. Stresses you are not missing. You are not doing. Okay. Medhipatischa. Medipatischa me. Upagum Soscha me. Tadyamascha me. Aindravayavascha me. Upagumtuscha me. Taryamascha me. Aindravayavascha me. Aindravayavascha me. Aindravayavascha me. Again, begin it from Agum system. Agumtuscha me. Rasmischa me. Dābhyascha me. Dipatischa me. Upagumtuscha me. Taryamascha me. Aindravayavascha me. It's very difficult to breathe, huh? Extend it. Why you are doing it? I told you, don't challenge yourself. Don't take extra effort. However, Guru is saying that you do like that. Over the period of time, you will improve. This is not a competition. You should understand it. Don't take it personally, but this is not a competition. The first and foremost thing, you should get the correct swaram for each word. That is most important. Yes. Breath will improve constantly. Okay? This is not a competition. Yeah. Agum sascha me rasmischa me dābhyascha me dhipatischa ma upagum. See, how I'm taking it. Upagum sascha me tadyamascha ma aindravayavascha me. Even after me tadyamascha ma, also I'm taking breath. So why you are praying like that? Yes. Aram se do. Okay? Anjanji, please. Agumtuscha me. Rasmischa me. Dābhyascha me. Dipatischa me. Medhi, it is wrong. Medhipatischa ma. Okay. Medipatischa me. Medhipatischa ma. Agumtuscha me. Rasmischa me. Dābhyascha me. Dipatischa me. Medhipatischa. See, may don't elongate like that. I do understand there is a syllabi, but instead of elongating very long, you make it long and do it simply. Medhipatischa ma. Otherwise, may. See what happens now. May. There itself my breath gone. Where is the strength for making the? Okay, you will, power will lose. Agum sascha me rasmischa me dābhyascha me dhipatischa ma. Simple. Yeah. Agumtuscha me. Rasmischa me. Dābhyascha me. Dipatischa me. Upagumtuscha me. Tadyamascha me. Aindravayavascha me. You could able to pronounce it completely, but made a mistake in main tarya. See, tarya should go down, but instead of that, your breath went down. Still, you are feeling it as a competition. You are not taking the breath as I told you. Still, you are, adamant. Please stop it. Please do as I like. See, from agum susame, rasmischa meda abhyastame, medipatistama. Take a breath. Okay, take a break. Aram se you will do perfectly. I told you this is not a competition. Upagum soscha me taryamascha ma. Again take breath. Okay. Then aindravayavascha me. Aram se with full breath you can swing this. Yeah. Agumtuscha me. Rasmischa me. Dābhyascha me. Dipatischa me. Upagumtuscha me. Taryamascha me. Aindravayavascha ma. Take a breath. There you should. Now you say. Already you have taken a breath. Now you say. Agumtuscha me. Rasmischa me. Dābhyascha
मे अधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मे तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे. Little bit better. Improve it, okay? मैत्र वरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे. मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे. प्रति fully प्रतिप्रस्था, pra is down, you observe that, Anudatam is there. प्रतिप्रस्थानश्च मे. प्रतिप्रस्थानश्च मे. शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे. शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे. Okay. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्ग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च वैश्वानरश्च, please do like that. वैश्वानरश्च म. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मेति See, breathing is most important. I told you in the beginning itself. It is not important to complete the continuous sentence. You can take breath everywhere, but keeping the breath is most important. Otherwise, you imagine if you are chanting this on Shivratri, okay? On Shivratri, we chant it at 11 times, entire Rudram. Okay, 11 times means by the time, say, even if you start it at 8 o'clock, by the time you go by 11, 11:30, 12 o'clock, your eyes will already be dropping. Eyes will be dropping, breath will drop, food will not be there. You imagine? Okay, please. Do it properly. Breathe is most important. Yes. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च म. ग्राह्याश्च म. ग्राह्या no. ग्राह्याश्च म. ग्राह्याश्च म. How I am chanting? Just observe and do it. You say aschama. Same. ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे. Devascha me Vaishvadevascha me. Dev is down, not Va is down. Vaishvadevascha me. वैश्वदेवश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे महेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हरियोजनश्च मे. मरुत्वतीयाश्च मे महेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे. पात्नीवतश्च मे. पात्नीवतश्च मे no Kanyanji. Patnivatascha me. Ni is elongation, okay? Patnivatascha me hariyojanascha me. Patnivatascha me hariyojanascha me. Pa you don't have to elongate so long, but Ti you have to do it, okay? Patnivatascha me hariyojanascha me.
परियोजनश्च मे. Very good, very good. Okay, we will start Ashtamanavakam. Okay. Again, we will start from I think Valamati ma'am. No, who started first? Valamati ma'am only. No? Yeah. Yidmascha me barihischa me. Idbhascha me, barhischa me, Barihischa me. barihischa me. See, please try to understand. First idmascha me will go up. The rest all mays will come down. In every line, that is the rule in this Ashtamanavakam. Okay. Of Chamakam, okay? See, I chant once, you try to understand every may is very important there. Because many pandits will make, when you chant, they chant, you have to see. When you know how to chant correctly, I have seen, South India's oldest Shiva temple, they are chanting it incorrectly. Live I have seen, but I have not told them because that is not correct. So instead of before public, we should not tell that. But I know what is correct, what is wrong. So I am telling you. Idmascha me. The may went up. Okay. Next one. Barihischa me. Down. Vedischa me. Down. Dishniyascha me. Down. Got it? Yidmascha me, barihischa me, vedischa me, dishniyascha me. Idmascha me. Me, what is that? Me, you up no. Idmascha me. Yidmas. See, E also went down. Yidmascha me. Idmascha me. Me upper, madam. Idmascha me. Barihischa me. Barihischa me. Vedischa me. Vedischa me. Vedischa, not the, it is Vedischa me. Vedischa me. Dishniyascha me. Dishniyascha me. Cha me. No. Dishniyascha me. I hope everyone observed. Yidmascha me, that may is up. In the rest all mays, Barihischa me, Vedischa me, Dishniyascha me, down. I hope everyone understood. This rule will follow, you have to follow in the entire Ashtamanavakam. Everywhere like that. The first word will be upper. May. First may is upper. Then all mays will be down. Okay, this is the rule. Up to some point, last two are somewhat different, but rest all are similar. Last three, I think. You will see. Idmascha me, barihischa me, vedischa me, dishniyascha me. Idmascha me. Idma. Idmascha me. Idmascha me. Barihischa me. Barihischa me. Idmascha me. Barihischa me. Vedischa me. Dishniyascha me. Dishniyascha me. Dishniyascha me. Sruchascha me. Chamasascha me. Sruchascha me. Sruchascha me. Upper. Sruchascha me. Sruchascha me. Chamasascha me. Chamasascha me. Gravanascha me. Gravanascha me. Svaravascha ma. Svaravascha ma. Stop there. Again from the beginning you start. Idmascha me. See down. E is down. Idmascha me. Idmascha me. Okay. Idmascha me. Barihischa me. Vedischa me. Dishniyascha me. Dishniyascha. Madam, did you observe how the may is pronounced? And if you could not able to pronounce a certain particular word, you practice that 3 to 4 times, you don't mind. But it should pronounce correctly.
Yadmascha me, barihischa me, vedischa me. See, that may differentiation you have to show. Whenever there is anudatam and udattam and middle, the difference you must show in your swaram. See how I am chanting E, you observe. Yadmascha me. See, me up, okay. Barihischa me, down. Yadmascha me, barihischa me. Yadmascha me, barihischa me. Vedischa me, dhishniyascha me. You observe? Yes. Differentiation, crystal clear, you have to show them. See, the difference between the people, those who have not learned Veda from a proper guru and learned from some, online, they will learn. People with interest, they will learn. I am not saying that they should not, but in the absence of a guru, that is the only way for them. But everybody, however you learn, that you should understand that swaram is most important. Without swaram, even if I give the text, you can also read, no? Okay, that should not. Properly, whenever there is a swaram, you must show that you are chanting that swaram. The swaram is most important. Yes. I'll try it. Please try. Good. Idmascha me barihischa me vedischa me dhishniyascha me. Once more I think so. Idmascha me barihischa me Barihischa me. Idmascha me barihischa me vedischa me dhishniyascha me. That's it. Please do it again. Idmascha me barihischa me vedischa me dhishniyascha me. Dhishniyascha me. Dhishniyascha me. Dhishniyascha me. Dhishniyascha me. Idmascha me barihischa me vedischa me dhishniyascha me. Dhishniyascha me. Dhishniyascha me. Dhishniyascha me. Dhishniyascha me. Srochascha me. Sruchascha me. Me upper. Srochascha me. Sruchascha me. Chamasascha me. Chamasascha me. Gravanascha me. Gravanascha me. Svaravascha ma. Svaravascha ma. Sruchascha me. Chamasascha me. Gravanascha me. Svaravascha ma. Sruchascha me. Chamasascha me. Gravanascha me. Svaravascha ma. Uparavascha me. Dhyashavane cha me. Dronakalasascha me. See, I will say one more time. Uparavascha me. Dhyashavane cha me. Dronakalasascha me. Uparavascha me. Dhyashavane cha me. Dronakalasascha me. Please chant one more time. Uparavascha me. Dhyashavane. See, madam, is there any difference between va and ischa in your swaram? Cha is up. Then where is that upper tone? Uparavascha me. Deshavane cha me. Deshavane vane. See, how I am that? Normally, deshavane cha me. Like that you are chanting. Deshavane cha me. See how I am chanting. Deshavane cha me. Dronakalasascha me.
द्रोणकलशश्च मे द्रोणकल down कलशश्च मे द्रोणकलशश्च मे that's correct उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे उपरवाश्च मे धिषवणे च द्रोणकलशश्च what madam where you left me उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे उपरवाश्च मे धिषवणे च मे धिषवणे च मे धिषवणे च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे द्रोणकलशश्च मे द्रोणकलशश्च मे कलशश्च मे कलशश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे स्रोचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे विद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सृचश्च मे stop again say it again धिष्णियाश्च मे whenever you are making mistake start from the beginning विद्मश्च मे बर्हिश्च मे बर्हिश्च मे बर्हि see please chant clearly बर्हिश्च मे down इद्मश्च मे इद्मा इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे धिष्णियाश्च मे धिष्णियाश्च मे धिष्णियाश्च मे स्रोचश्च मे okay carry on इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे धिष्णिया see धिष्णियाश्च मे why you are chanting like that धिष्णियाश्च मे धिष्णियाश्च मे शुचश्च मे चमसाश्च मे स्रोचश्च मे see up मे is up स्रोचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे सृचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणाश्च मे ग्रावाणश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरश्च म स्वरवश्च म स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे no gap you can see the elongation symbol there should not be any gap उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे धिषवणे उपरवाश्च मे धिषवणे there should not be any gap you should elongate and chant उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे द्रोणकलशश्च मे द्रोणकलशश्च मे कलशश्च मे why you are chanting like that you are changing the swaram स्वरम् according to your own way you are chanting there should be a proper द्रोणकलशश्च मे see द्रोणकलशश्च मे कलशश्च मे you chant it द्रोणकलशश्च मे कलशश्च मे up द्रोणकलशश्च मे what is dronakalasam you know what is dronakalasam No, sir. that is dronakalasam means that is a shallow kalasa that is very small small pot that is used for pouring ghee okay in homam so that small vessel also you are asking Parameshwara okay that is one of the wish dronakalasam dronakalasascha me द्रोणकलशश्च मे idmascha me barihischa sorry
I mean wrong. Idmascha me, barihischa me, vedischa me, dhishniyascha me, sruchascha me, chamasascha me, gravanascha me, swaravascha me, uparavascha me, dishavaneccha me, dronakalasascha me. Idmascha me, barihischa me, vedischa me, dhishniyascha me, Dhishniyascha me. dhishniyascha me, idmascha me, barihischa me, vedischa me, dhishniyascha me, Dhishniyascha me. dhishniyascha me. Sruchascha me, chamasascha me, gravanascha me, Gravanascha me. gravanascha me, swarascha ma, uparavascha me, dishavaneccha me, Uparavascha me. Dhishavaneccha me. uparavascha me, dishavaneccha me, dronakalasascha me, Dronakalasascha me. dronakalasascha me. Dronakalasascha me. Dronakalasascha me. Vayavyani cha me. Potabhrucha ma. Vayavyani cha me, potabhrucha, Potabhrucha ma. potabhrucha ma, Adhavaniyascha ma. adhavaniyascha ma, Adhavaniyascha ma. adhavaniyascha ma, Vayavyani cha me. Potabhrucha ma. Adhavaniyascha ma. vayavyani cha me, potabhrucha ma, adhavaniyascha ma, Agni-idhram cha me. agni-idhram cha me, Agni-idhram cha me. agni-idhram cha me, Havidhanam cha me. havidhanam cha me, Grihascha me. grihascha me, Sadascha me. sadascha me, Purodasascha me. puroda, Puroda, no. It's Purodasascha me. puroda, shascha me, Purodasascha me. puroda, shascha me, Why you are elongating, madam? Purodasascha me. puroda, shascha me, Purodasascha me. puroda, shascha me. Don't break. I am breaking only to make you understand. You don't break. Purodasascha me. puroda, shascha me, Pachatascha me. pachatascha me, Vabhruthascha me. vabhrutascha me, Vabhruthascha me. vabhrutascha me, Pachatascha me. Vabhruthascha me. Swagakarascha me. patascha me, Pachatascha me. Not patascha. pachatascha me, vabhrutascha me, swagakarascha me, Swagakarascha me. swagakarascha me, Sadascha me. Purodasascha me. Pachatascha me. Vabhruthascha me. Swagakarascha me.
सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे बभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे स्वगाकारश्च मे स्वगाकारश्च मे स्वगाकारश्च मे वायव्यानि च मे पोतवृक्षमाधवनीयश्च म आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे ववृथश्च मे स्वगाकारश्च मे वायव्यानि Vayavyan, from Vayavyan you start, madam. वायव्यानि च मे पोतभृच्च म आधवनीयश्च मे Potabhruchama, it is Potabhruchama. वायव्यानि च मे पोतभृच्च म आधवनीयश्च म Adhavaniyascha. आधवनीयश्च म आग्नेयेध्र च मे आग्नेयेध्रं च मे आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पुरोडाशाश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे No gap. Pachataश्च मे ववृथश्च मे स्वगाकारश्च मे पचताश्च मे ववृथश्च मे स्वगाकारश्च मे स्वगाकारश्च मे स्वगाकारानुरंग स्वगाकारश्च मे स्वगाकारश्च मे वायव्यानि च मे पोतमृच्छम आधवनीयवश्च मे आधवनीयश्च म प्लीज ऑन वायव्यानि च मे पोतभृच्च म आधवनीयश्च मे यश्च म आधवनीयश्च म वायव्यानि च मे पोतमृच्छम आधवनीयश्च म वायव्यानि च मे पोतभृच्च म 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 आधवनीयश्च म आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे ववृथश्च मे स्वगाकारश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे ववृथश्च मे ववृथश्च मे ववृथश्च मे ववृतश्च मे ववृथश्च मे था सेकंड था धा था धा था था like that था ववृथश्च मे ववृथश्च मे स्वगाकारश्च मे स्वगाकारश्च मे right
सदश्च मे पुरोरसाश्च मे पचताश्च मे बभ्रुधश्च मे स्वकाकारश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे बभ्रुधश्च मे स्वगाकाराश्च मे कारश्च मे स्वगाकारा it is not karagaram it is स्वगाकारश्च मे स्वगाकारश्च मे वायव्यानि च मे पोतभृच्च माधवनीयश्च म आग्नेयेध्रं च मे हविर्धनं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे बभ्रुधश्च मे स्वगाकारश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च आधवनीयश्च आग्नेयीध्र च मे ध्रम आग्नेयेध्रं च मे आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे no gap पचताश्च मे बभ्रुतश्च मे स्वगाकाराश्च मे Karaश्च मे no स्वगाकारश्च मे with practice only you will okay you mute and who will be the next Varaprasad ji no ready sir यद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे श्रुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म श्रुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे उपरवाश्च मे ऋषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पोतभृच्च माधवनीयश्च म वायव्यानि च मे पूतभृच्छम भृच्चमसि see it is भृच्चम भृच्छम भ्रू cha is not there cha पोतभृच्चम पूतभृच्छम भ्रू बाहर bh भृच्चम पूतभृच्छम भृच्चम भृच्छम correct वायव्यानि च मे पोतभृच्च आधवनीयश्च म वायव्यानि च मे पूतभृच्छम आधवनीयश्च म आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे बभ्रुधश्च मे स्वगाकारश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे बभ्रुधश्च मे स्वगाकारश्च मे correct good work Prasad ji next Meenakshi madam Yes, sir. यद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे यद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे श्रुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म श्रुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे उपरवाश्च मे ऋषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पोतभृच्च आधवनीयश्च म वायव्यानि च मे पूतभृच्छ पोतभृच्च please
पोतभृच्चम पोतभृच्छम भ्रू भ्रू भृच्चम भृच्छम वायव्यानि च मे पोतभृच्चम आधवनीयश्चम वायव्यानि च मे पोतभृच्छम आधवनीयश्चम आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे हविर्धानं च मे हविर्धानं च मे हविर्धानं च मे नम should go up हविर्धानं च मे हविर्धानं च मे हविर्धानं 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 च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे गृहाश्च मे आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडासाश्च मे पचताश्च मे ववृधश्च मे स्वगाकारश्च मे सदश्च मे not madam, it is sadascha me. सदश्च मे one second सदश्च मे पुरोडासाश्च मे पचताश्च मे ववृधश्च मे स्वगाकारश्च Vabhrudhascha me, vabhrudam, vabhrudhascha me, no, not like that. It is vabhrudhascha me, vabhrudhascha me. ववृधश्च मे But it is not dha, it is tha. Vabhrudhascha me. ववृधश्च मे Swagakarascha me. स्वगाकारश्च मे Vabhrudhascha me, swagakarascha me. ववृधश्च मे स्वगाकारश्च मे Right. Kanyanji, you go on with me. Yes, sir. यद्भश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे Itmascha me, Berhischa me, Vedischa me, Dishniyascha me, श्रुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरभश्च म Sochascha me, Sochascha me, Chamasascha me, Gravanascha me, Swarapascha me, उपरभाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे Uparvascha me, Dishavane me, Dronakalasascha me, द्रोणकलशश्च मे Dronakalasascha me, वायव्यानि च मे पोतभृच्च आधवनीयश्च म Vayavyani cha me, Putavrucha Advaniyascha me, आग्नेयेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे Agni-idram cha me, Havirdanam cha me, Gruhascha me, सतश्च मे पुरोडासाश्च मे पचताश्च मे ववृधश्च मे स्वगाकारश्च मे Sadascha me, Purodasha ascha me, Pachatascha me, पचताश्च मे Pachatascha me, Vaprutthascha me, Swagakarascha me, सदश्च मे पुरोडासाश्च मे पचताश्च मे ववृधश्च मे स्वगाकारश्च मे Sadascha me, Purodasha ascha me, Pachatascha me, Vaprutthascha me, Swagakarascha me. Very good, Kanyanji, very good. Your swaram is good. Sir, you said like it will be clear why
8 Anu, why we are asking all this thing in 8 Anuvakam, like. Yeah, not now. It will come down in 10th Anuvakam. Okay. Not in 8th. It's in 10th. Okay. Okay. Next, Valamati ma'am. Yes, sir. Please concentrate ma'am. Yes, sir. Namamanakam, this is 9th one. Agnescha me, Agnischa me, Gharmascha me, Kascha me, Suryascha me, Dharmascha me, Kacha me, Kascha me, Gharmascha me, Kascha me, Dharmascha me, Kascha me, Kascha me, it's not madam, it is Kascha me, Kascha me, Dharmascha me, Kascha me, Suryascha me, Agnescha me, Gharmascha me, Kascha me, Suryascha me. Agnischa me, Dharmascha me, Kascha me, Suryascha me. Oh, you're not understanding. Mere kascha me, akka, mere kascha me. Me kascha me. Agnescha me, please listen. Agnescha me, Gharmascha me, Kascha me. So that cha is up, me is down. Agnescha me, both are up here, okay? Chame, cha is also up, me is also up. Agnescha me, Gharmascha me, Kascha me. You can hear that chame will go up. Agnescha me, Gharmascha me. This is down. Agnescha me, uppera, okay? Gharmascha me, Kascha me. Suryascha me is up. Agnischa me, Agnischa me, Dharmascha me, Kascha me, Suryascha me. Kascha me, Kascha me. Kascha me, Suryascha me. Suryascha me. Agnescha me, Gharmascha me, Kascha me, Suryascha me. Agnischa me, Dharmascha me, Kascha me, Suryascha me. Pranascha me, Swamedhascha me. Pranascha me, Swamedhascha me. Aswamedhascha me. Aswamedham also you have wanted to. Pranascha me, Swamedhascha me. Pranascha me, Swamedhascha me. Pranascha me, Swamedhascha me. Pranascha me, Swamedhascha me. Prithvi cha me, Detischa me, Detischa me. Prithvi cha me, Ditischa me. Detischa me. Prithvi cha me, Detischa me, Detischa me. Prithvi cha me, Ditischa me, Ditischa me. First the up, next T is up, okay? Prithvi cha me, Detischa me, Detischa me. Prithvi cha me, Ditischa me, Ditischa me. Pranascha me, Swamedhascha me, Prithvi cha me, Detischa me, Detischa me. Pranascha me, Swamedhascha me, Prithvi Me cha me. Swamedhascha me, this up, me is up, okay? Pranascha me, Swamedhascha me, Prithvi cha me, Detischa me, Detischa me. Pranascha me, Swamedhascha me, Prithvi cha me, Ditischa me, Ditischa me. Yauscha me, Deuscha me, Sakvari Rangula. Shakvari Rangula. Not simply Rangula, it is Rangula. Shakvari Rangula. La up, okay, Ra down. Sakvari Rangula. Shakvari
Sakvarirangula. Dyauscha me sakvarirangula. Dyauscha me sakvarirangula. Rangula yo dom yo. Rangula yo. Disascha me. Disascha me. Dyauscha me sakvarirangula yo. Disascha me. Dyauscha me. Dyauscha me. Dyauscha me sakvarirangula yo. Disascha me. No, don't mix like that. Rangula yo. Down. Yo is down, right up. Sakvarirangula yo. Sakvarirangula yo. Disascha me. Sakvarirangula yo. Disascha me. Agnischa me, gharmascha me, arkascha me, suryascha me, pranasva me, swamedhascha me, prithivicha me, ditischa me, dyauscha me, sakvarirangula yo, disascha me. Trying only, everybody will practice and will come to one level. No, don't be afraid. Agnischa me, gharmascha me, tascha me, suryascha me, Suryascha me, suryascha me, pranascha me, swamedhascha me, prithivicha me, ditischa me, ditischa me, down, ditischa me, ditischa me, dyauscha me sakvarirangula yo. sakvarirangula yo. Sakvarirangula yo. Disascha me. Again. Agnischa me, gharmascha me, arkascha me, suryascha me, pranasva me, swamedhasva me, prithivicha me, ditischa me, dyauscha me, sakvarirangula yo, disascha me. Agnischa me, gharmascha me, arkascha me, suryascha me, pranascha me, swamedhascha me, prithivicha me, ditischa me, dyauscha me sakvarirangula yo. Disascha me. Correct, good. Please say it one more time. Agnischa me, gharmascha me, arkascha me, suryascha me, pranascha me, swamedhascha me, prithivicha me, ditischa me, dyauscha me sakvarirangula yo. Disascha me. Yes. Disascha me. Correct. Yajnena kalpantam vrukcha me. No, see, Telugu, Kannada and most of the South Indian languages people will say Yajnena. But the pronunciation according to Sanskrit, there is no Yajnam. Okay? It is Yajne, not Yajne. Got it? Yajnena kalpantam vrukcha me. See that Yajnena in Sanskrit, Yajnam is not there. Yajya. Okay? Yajyam. Yajyam. Okay? Like that, in South Indian languages, even I am a Telugu guy, but still, Telugu people will say Yajnam. Yajnena kalpantam vrukcha me.
Here many pandits will chant like that, but that is incorrect. Okay, that is according to Telugu. But all kinds of Vedam we should chant in Sanskrit only. So probably by pronouncing we should say Yajnena kalpanta brachame. Got it? Okay. Desascha-me yajnena kalpanta brachame. दिशश्चमे यज्ञेन कल्पन्तां वृक्षमे Samachame सामचमे stomaschame स्तोमश्चमे yajuscha-me up यजुश्चमे diksha-cha-me down दीक्षाचमे tapascha-ma तपश्चम rutuscha-me ऋतुश्चमे vratam-cha-me ho व्रतं च मे हो ratrayo रात्रयो vratam-cha-me ho ratrayo vyushtya व्रतं च मे हो रात्रयो दृष्ट्या vratam-cha-me ho ratrayo vyushtya व्रतं च मे हो ratrayo vyushtya व्रतं च मे हो रात्रयो दृष्ट्या bruhadrathantare cha me बृहद्रथन्तरे च मे thanta, that is thanta is down, okay, bruhadrathantare cha me बृहद्रथन्तरे च मे yajnena kalpetam यज्ञेन कल्पेताम् agnischa me gharmascha me kascha me suryascha me pranascha me swamedhascha me prithvicha me ditischa me dyauscha me sakvari rangulayo desascha me yajnena kalpantam vrukcha me samacha me stomascha me yajuscha me dikshacha me tapascha maratuscha me vratam cha me ho ratrayo vyushtya bruhadrathantare cha me yajnena kalpetam. अग्निश्च मे घर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे ditischa me दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे sakvari rangulayo like that. शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे Disascha me शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन yajnena kalpantam vrukcha me यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे सामच मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे yajuscha me up, that is up, yajuscha me यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च ऋतुश्च मे व्रतं च vratam cha me ho ratrayo vyushtya व्रतं च मे हो vratam cha me ho ratrayo vyushtya व्रतं च मे हो रात्रयो दृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च bruhadrathantare cha me
थन्तरे च मे थन्तरे च मे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन यज्ञेन not यज्ञेन कल्पेताम् बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् मृक्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मृक्ष मे सामच मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतुश्च तपश्च मे is where is it madam तपश्च मरुतुश्च मे तपश्च मरुतुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मृक्ष मे सामच मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे up that is up यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे madam again you are not concentrating where is tapasya me 2 times I am telling दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे from yajnana kalpantam please do it again please concentrate madam yes यज्ञेन कल्पन्ताम् मृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे where is yajuscha me where is it yajuscha me up no I was telling see samacha me down stomascha me down yajuscha me up dikshacha me down tapascha me middle rutuscha me up you can see that anudatam udatam sir easily you can find it out from yajnana again यज्ञेन कल्पन्ताम् मृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे no problem good दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् व्रतं च मे होरात्रयोर्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे थन्तरे था बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् good व्रतं च मे होरात्रयोर्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् व्रतं च मे होरात्रयोर्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च थन्तरे down inta is down ta is down थन्तरे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन यज्ञेन ya is down ye middle na up यज्ञेन कल्पेताम् this word you should understand very carefully yajnana kalpeta very important next entire thing will be upon that only dasamanvakam yajnana kalpetam pronounce properly yajnana kalpetam
यज्ञेन कल्पेताम् Good. व्रतं च मे होरात्रयोर्व्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रन्थरे च मे बृहद्रन्थरे च मे not it is बृहद्रथन्तरे च मे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् three times यज्ञेन कल्पेताम् no not like that यज्ञेन कल्पेताम् यज्ञेन कल्पेताम् यज्ञेन कल्पेताम् यज्ञेन कल्पेताम् three times from Vratam Chame to Yajnana Kalpetam you chant properly. Until you chant properly I will not leave you madam. व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रन्थरे च मे बृहद्रन्थरे च मे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् यज्ञेन कल्पेताम् यज्ञेन कल्पेताम् येन कल्पेताम् give me for Yajnam I am saying. व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रन्थरे च मे again. बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् व्रतं च मे होरात्रयोर्व्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे बृहद्रथन्तरे च मे थन्तरे च मे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् again व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् very good finally you got it excellent okay next Varaprasad ji are you ready Valmati ma'am you go on mute Agnischa me Gharmascha me Kascha me Suryascha me अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे सक्वरीरङ्गुलयोतिसश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्ष मे यौश्च मे सक्वरीरङ्गुलयोधितश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे No, you differentiate between mays, okay? Yajuscha me is only the may which will go up, okay? Even it is not shown, you have to sing it like that, okay? Chant it like that, not singing. Yajnana kalpanta mrukcha me down, samacha me down, stomascha me down, yajuscha me up, dekshacha me down, tapascha ma middle, rutuscha me up. Come on. यज्ञेन कल्पन्तामृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्व्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् व्रतं च मे होरात्रयोर्व्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् please say यज्ञेन कल्पेताम्
good. Okay. यज्ञेन कल्पेत व्रतं च मे होरात्रयोर्व्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेत that chame vratam chame little bit along it sir vratam chame horatrayorvyushtya bruhadrathantare chame yajnena kalpetam व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेत it is bruhadrathantare you are not saying dhantare no thantare it is not dha okay tha बृहद्रथन्तरे thantare yeah व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् excellent Varaprasad ji very good keep it up next Meenakshi ma'am are you ready Yes, sir. Yes. अग्निश्च मे घर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे सक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्त भृक्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्व्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् You can do it. I know you can do it. Your swaram is so nice. You do it. द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् व्रतं च मे होरात्रयोर्व्युष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्. Please say it properly. Maybe I think I went elongated last time. Yeah, do it. व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या How you are standing? होरात्रयोर्व्युष्ट्या. होरात्रयोर्वृष्ट्या Correct. Good. Okay, I'll From the beginning. Yeah. okay, sir. व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे thantare च मे thantara thanta is going down madam got it Okay. good Thigh is going down. yeah बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् बृहद्रथन्तरे च मे thanta madam tha बृहद्रथन्तरे thantare good you catch the chord the swaram Yes. Anta is going down. tha is okay ta next ta simple ta is going down It's going down. yeah Bृहद्रथन्तरे no tantare it is thantare बृहद्रथन्तरे no madam you are mixing both thas that is one question bruhadra okay next is not ta it is tha okay bruhadra thantare tha is okay next tare
cha me yajnena kalpeta. See how nice it is. Yes. Druhadrathantare cha me yajnena kalpeta. Vratam cha me horatrayo vyushtya bruhadrathantare cha me yajnena kalpeta. Read, madam, read. Vratam cha me horatrayo vrishya bruhadrathantare cha me yajnena kalpeta. Good, very nice, very nice. Okay, congrats, madam. Superb, fantastic. Thank you. Yeah. Kanjanji, are you ready? Yes, sir. Agnischa me, Gharmascha me, Kascha me, Suryascha me. Agnischa me, Garmascha me, Kascha me, Suryascha me. It is Gharmascha me, Kanjanji. Gharmascha me. Agnischa me, Gharmascha me, Kascha me, Suryascha me. Agnischa me, Garmascha me. Gha. Go, I'm saying go only, sir. Okay, I think because of your pronunciation, I could not able to understand whether you are saying Gha or Ga. Oh. Agnischa me, Garmascha me, Kascha me, Suryascha me. Good. Pranascha me, Swamedhascha me, Prithvi cha me, Detischa me, Detischa me. Pranascha me, Swamedhascha me, Prithvi cha me, Detischa me, Detischa me. Yauscha me, Sakvari Rangolayo. Yauscha me, Sakvari Rangulayo. Desascha me, Yajnena kalpanta, Mrukcha me, Samacha me, Stomascha me, Yajuscha me, Dikshacha me, Tapascha marutuscha me, Vratam cha me, Horatrayo vyushtya, Bruhadrathantare cha me, Yajnena kalpeta. Disascha me, Yajnena kalpanta, Mrukcha me, Samacha me, Stomascha me, Yajuscha me, Dikshacha me, Tapascha marutuscha me, Vratam cha me, Horatrayo vrushtya, Bruhadrathantare cha me, Yajnena kalpeta. Two mistakes. What you are saying? Yajustame, Dikshachame. You are saying Dikshachame. From the beginning, I observed that you had I don't know why you will not elongate when there is an elongation swarm. You cut it deliberately. You correct it. Whenever there is an elongation, you please try to elongate. Yajuschame, Dikshachame, Dikshachame. You are saying Dikshachame like that. No. Okay? Yeah. Please chant from Yajuschame, you chant. Yajuscha me, Dikshacha me, Tapascha marutuscha me, Vratamcha me, Horatrayo vrushtya. See how you are chanting? Horatrayo vyushtya. Horatrayo vyushtya. If you don't elongate, that vrushtya will not come to you. Because where from you will take that breath? Understood? Vratam cha me horatrayo vyushtya. Vratam cha me, Horatrayo vrushtya. Bruhadrathantare cha me yajnena kalpeta. Bruhadrathantare cha me, Yajnena kalpeta. Okay, so with this we completed today's class, and I hope everybody got their inputs. Yes. Yes, sir. Yeah. Thank you. So excellent. We are slowly but steadily we are progressing towards completion of Chamakam also. By next class, I think we will complete Chamakam also. Once that is completed, I'll try to teach you. Lagunyasam I will teach. Lagunyasam, Nyasam, Lagunyasam, Rishichandas Nyasam. That I will teach, because that is very big
and it's almost very long, but swarams will be less there. So everybody will chant it relatively easily. Namakam is a test of swaram and chamakam is a test of breath. Because when God appears before you, you have to ask him without any breath. I want this, I want this, I want this. Like, otherwise he might disappear. You should not forget asking anything. Okay, all the best and see you in next class. Bye bye. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.